So hello everyone, I welcome you all to the another lecture of the series on lipids. Today we will be discussing about lipoproteins. So let's start. So when we talk about lipoproteins, as you know, इसके नाम में एक तो लिपो है और दूसरा वर्ड है प्रोटीन. तो इसका मतलब ये किससे मिलके बना है? लिपिड and protein. So it is composed of lipids and proteins. So when it is composed of lipids and proteins, it clearly indicate कि इसमें lipid भी होगा, protein भी होगा, and they are large water soluble complexes. Okay, they are formed by the combination of lipid and protein that transport the insoluble lipids through the blood between the different organs and tissues. So usually lipid को carry अगर करेगा blood तो lipid is not soluble in the blood. So एक complex बना लेता है वो, that is known as lipoprotein, जिससे कि वो blood में transport हो सके, easily blood में transport हो सके. So now if we talk about that, what do the lipoproteins consist of? So you'll clearly see that the lipoproteins, they consist of a core, which is containing the non-polar triacyl glycerol and cholesterol ester. You can see here, this is the, core. बीच में ये core होगा. This is the core. It contains of triacyl glycerol, one, and another one is it will contain the cholesterol ester, and they will be surrounded by a single layer of amphipathic phospholipids. They will be surrounded by single layer of amphipathic phospholipids and free cholesterol molecule with proteins. So these black one, they are the cholesterol molecule that are remaining free. They are not embedded, they are not bound. They are, free. So it is surrounded by a single layer of amphipathic phospholipids and free cholesterol molecules with the proteins. अब हम बात करते हैं कि जो लिपोप्रोटीन्स हैं इनको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है. एक तो आ गया आपका साइज बेसिस पर, दैट वन इज वेरी लार्ज size lipoproteins, they are known as chylomicrons. Another one is the very low density lipoproteins, they are large. And then is the low density lipoprotein, they are small. Then is the high density lipoprotein, they are the smallest. So usually as the density increases, the percent protein also increases. As we see that the density is increasing, it's not about the size, it's about the density. The density is increasing. Okay, chylomicrons की सबसे, although they are large, but their density is low. Balloon होता है वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन उतना ज्यादा उसकी density थोड़ी ना होगी, mass upon volume. वॉल्यूम उसका कम होगा तो ऑब्वियसली उसका जो डेंसिटी है वो भी उसकी कम हो जाएगी, है ना. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोटीन इनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और डायमीटर डिक्रीज हो रहा है. वी कैन सी दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द diameter. Okay, so now moving on to the another informations, that chylomicrons containing about 1% proteins and 99% triacylglycerol have the lowest density. सबसे ज्यादा low density किसकी होगी? chylomicrons की होगी. और उसमें प्रोटीन कितना होगा? केवल और केवल 1% प्रोटीन उसमें होगा. किसमें? chylomicrons में केवल 1% प्रोटीन होगा. While the HDL, high density lipoprotein, it contains 50% of protein and 50% of lipid. ठीक है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा उसमें प्रोटीन कम होगा, फैट ज्यादा होगा. इसीलिए हम कहते हैं कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो आपके लिए टॉक्सिक है. इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, so also the triacyl glycerol, it is the predominant lipid in the chylomicrons and the VLDL.
तो काइलोमाइक्रॉन हो या वीएलडीएल हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा लिपिड प्रीडोमिनेंटली कौन सा पाया जाता है? दैट इज द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। एंड कोलेस्ट्रॉल इज द डोमिनेंट लिपिड इन एलडीएल। जब हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि हम कोलेस्ट्रॉल की डायरेक्टली बात कर रहे हैं। वेयर एज फॉस्फोलिपिड इज द प्रीडोमिनेंट लिपिड इन एचडीएल। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। और जब भी हम गुड फैट की बात कर रहे हैं, गुड लिपिड्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई डेंसिटी lipoprotein. Okay. Also, the percentage of the three major lipid classes is triacylglycerol, सबसे ज़्यादा, then cholesterol and phospholipids present in lipoprotein. So this is the percentage. Okay. So this is the table. You just see that where are the particular fats synthesized. You can see clearly that the chylomicrons, they are synthesized in the intestine. And what do? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइटरी लिपिड्स का, कहाँ से? इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज तक। एंड दी वेरी डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लिवर में बनते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। What do? They transport the triacylglycerol from liver to the peripheral tissues. Low density lipoproteins ये प्लाज्मा में ही बनते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल का लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज में। Okay, so the high density lipoproteins, they are synthesized in the liver and intestine, and they transport free cholesterol from the peripheral tissues to the liver. कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लिवर की तरफ, या आप यूं कह सकते हो दे आर रिस्पॉन्सिबल इन रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। चलिए जी, so this is the general slide of the variable कि साइज कितना है। साइज भी आप दे सकते हो, डायमीटर सबसे ज्यादा काइलोमाइक्रॉन का होता है, लेकिन डेंसिटी सबसे कैसी है इसकी? कम है ना, लेस देन 0.95, बाकी सबकी डेंसिटी ज्यादा है। और एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा ही होती है। सो यू कैन नोट इट डाउन, है ना, ये सारे इसके जनरल डायमीटर, मेजर लिपिड्स, अपोलिपोप्रोटीन्स और इसके लिपिड कंपोनेंट कितने हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, so now moving on to the type of lipoproteins. First of all is the eicosanoids. So इकोसनॉइड एक कलेक्टिव टर्म है, और कलेक्टिवली हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, थ्रोम्बोक्सेन को और ल्यूकोट्राइइन को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? वी से दैट दे आर द eicosanoids. So these eicosanoids, they are synthesized from arachidonic acid, which is a 20 carbon fatty acid. Okay, और इसमें तीन आपके मेजरली आते हैं, एक क्या था? प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा थ्रोम्बोक्सेन और तीसरा ल्यूकोट्राइइन्स. So if we talk about the prostaglandins, these prostaglandins, they are type of eicosanoids, 20 carbon compounds होते हैं and derived from arachidonic acid. And if we see the chemical structure, so they are derivatives of prostanoic acid. इसके पास एक 5 carbon ring होती है जिसको cyclopentane ring बोलते हैं, and there are 2 side chains that are known as R1 and R2. So what are the functions? Functions of prostaglandin are glandins are that they have the hormone-like activity. Prostaglandins and other eicosanoids act like hormones. It means that they will influence various biological processes in the body, and they help to regulate the synthesis of cyclic AMP. Cyclic AMP is a secondary messenger जिसको हम वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में, सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम्स में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको इंसुलिन ट्रांसपोर्ट बताया, उसमें भी एक सेकेंडरी मैसेंजर था, वैसे ही साइक्लिक एएमपी भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे regulate the synthesis of cyclic AMP in the tissues. Okay. They help in smooth muscle contraction and relaxation. So prostaglandin F2 alpha एक उसकी दूसरी type है. So during the pregnancy,
दिस इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द ऑक्सीटोसिन। और ये काम क्या करता है, ये यूटेराइन कंट्रैक्शन को प्रमोट करता है, जो कि आपके डिलीवरी के टाइम में, लेबर के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड समटाइम्स दिस प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इट इज आल्सो यूज्ड टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसीज। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2, एक F2 था, एक E2, इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जिससे सांस लेने में आसानी होती है, स्पेशली जब अस्थमा होगा तो तब आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन की जरूरत पड़ती है। ओके, so now prostaglandins they are also involved in inflammatory response. यहाँ पे इकट्ठा कर देना इसको। Inflammatory response, typing error है, that causes pain, edema, swelling and prolonged erythema by increasing the capillary permeability. Platelet aggregation करता है, aggression नहीं, sorry, aggregation करता है। Prostaglandins have an effect on platelet aggregation. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रमोट करता है एग्रीगेशन, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग में भी इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी डिक्रीज करता है। इट कैन लोअर सिस्टमैटिक आर्टेरियल प्रेशर थ्रू देयर वेसोडाइलेटर इफेक्ट। ऑल्सो जितने भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग फीवर एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन पेन। सो गैस्ट्रिक सिक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स also suppresses the gastric secretion. They are involved in sodium and water retention by the kidney tubules. आगे हम चलेंगे thromboxanes पर। Thromboxanes were first to isolated from blood platelets, जिसको हम thrombocytes भी बोलते हैं, इसीलिए इसका ये नाम रखा है। इनके पास एक 6-membered ऑक्सेन रिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन एटम होता है। So thromboxane को usually हम abbreviate करते हैं as a TX. So TXA and TXB they are used to show different substituents on the ring structure, है ना? जैसे subscript number indicates the number of double bonds, unsaturated double bond। और जैसे हम अगर ऐसे लिख देंगे TXA2 तो इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड है और मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये इसका, ठीक है। तो functions of thromboxanes, it is produced by platelets and promotes platelet segregation। और अगर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन प्रमोट करती है कोई भी चीज तो इसका मतलब है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिशिएट थ्रोम्बस फॉर्मेशन एट द साइज ऑफ वस्कुलर इंजरी। थ्रोम्बस मतलब थ्रोम्बिन का एक टाइट ब्लड क्लॉट बनता है, जैसे इंजरी होती है वहां पे थ्रोम्बिन का एक टाइट ब्लड क्लॉट बनता है। So this also causes contractions of smooth muscles of the arterial wall and raises the ब्लड प्रेशर। अब आगे हम चलते हैं ल्यूकोट्राइन्स पर। ल्यूकोट्राइन्स भी एक तरीके के लिपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। दे आर इनको इनिशियली ल्यूकोसाइट्स कहते थे, है ना, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्जुगेटेड ट्राइन सिस्टम, ठीक। बट नो रिंग इज फॉर्म्ड, जैसे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन की भी रिंग है, थ्रोम्बोक्सेन की भी रिंग है, इसमें कोई ऐसी रिंग नहीं बनती। सो what are the function? It facilitates chemotaxic, inflammation and allergic reactions. The leukotrienes induced contraction of muscles of the lung, lung के muscle की contraction करता है and constrict the pulmonary airways. LD4 has been identified as the slow reacting substance of anaphylaxis which causes smooth muscle contraction, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है? और at the sites of inflammation, it attracts neutrophils and eosinophils. So that's all for today. In case if there is any problem, so please let me know. Since you all are in your posting, आप अपना हॉस्पिटल में जो भी ट्रेनिंग है आप अच्छे से करो, है ना। ट्रेनिंग करने के बाद ये लेक्चर्स देके आप नोट मेकिंग करना, एंड इन केस इफ आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आपने वो पूछ लेना है। यू कैन आस्क इन दी ग्रुप, और नोट्स अगर ये वाले चाहिए होंगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द ग्रुप। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।